यसरी हामी उद्धार कार्यमा लागेका छौँ। सकिना किसानको उद्धार कार्यमा लागेका छौँ। बिहान आज 9:30 बजी उहाँलाई मेची खोलाले बगाएको थियो भने हामीलाई जानकारी पाएपछि हामी तुरुन्तै आइपुगेका छौँ। हामी आइपुग्नुभन्दा अलिकति अगाडि 8 नम्बर बटालियन एसएसबीका जवानहरू, उद्धार टोलीका जवानहरू अनि त्यसपछि नक्सलबारी पुलिस प्रशासन घटनास्थलमा उपस्थित भएर राहत तथा बचाउ कार्य गरिरहेको छ र पनि अहिलेसम्म पनि भेट्न सकेको छैन। हामी तपाईँहरूलाई लाइभ अपडेट दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू हामीसँग जोडिराख्नु होला आदिल जसमिन र आजको यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर कमेन्ट गरेर र हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी आग्रह गर्छौँ तपाईँहरू। नक्सलबारी ब्लकको मणिराम ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत ताराबारीका 2 आमा छोरीलाई मेची खोलाले बगाएको दुःखद घटना प्रकाशमा आएको छ। आज बिहान मेची खोला तरेर धान रोप्न जाने क्रममा अचानक खोलाको जलस्तर बढ्दा 2 आमा छोरीलाई बगाएको थियो भने तत्कालै आमा रिना किसानलाई बचाउ तथा उद्धार गरिएको थियो। तर छोरी सकिला किसानलाई अहिलेसम्म पनि भेट्न नसकिएको बताइएको छ। आज बिहान लगभग 9:30 बजेतिर मेची खोला तरेर 5-7 जना महिलाको टोली धान रोप्नका लागि जाँदै गर्दा अचानक खोला बढ्दा 2 आमा छोरीलाई खोलाले बगाएको थियो। घटनाको खबर फैलिने बित्तिकै स्थानीय पुलिस तथा 8औं बटालियन एसएसबीका जवान तथा नक्सलबारी पुलिस प्रशासन घटनास्थलमा पुगेको थियो। घटना भएको स्थानदेखि लगभग 7 किलोमिटर दक्षिण दिशातर्फ खोज्दा पनि छोरी सकिला किसानलाई फेला पार्न नसकिएको मणिराम ग्राम पञ्चायतका प्रधान गौतम घोषले जानकारी दिएका छन्। अर्कोतिर स्थानीय तथा एसएसबीका बचाउ टोलीले दिनभरि नै सकिला किसानको खोजी कार्य गरेको थियो। यता उनकी आमा रिना किसान अहिले नक्सलबारी ग्रामीण अस्पतालमा उपचाराधीन रहेकी छन्। उनले दिएको जानकारीका अनुसार अचानक खोलामा पानी बढ्दा आफू र आफ्नी छोरीलाई बगाएको थियो भने आफू बाँच्न सफल भए पनि छोरीको अहिलेसम्म कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन। के नाम हो तपाईँको? मेरो रिना किसान। रिना किसान कति बजीतिर जानुभएको थियो लगभग आज? 9 बजीतिर। कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? सधैँ जानुहुन्थ्यो? थुप्रै भन्दा पनि कति 10 जना 15 जना कति त्यस्तै 15-20 जना थियो। 15-20 जना थियो। तपाईँको नाम के पो भन्नुभयो? रिना। कति वर्ष पुग्नुभयो? छोरीको चाहिँ? हजुर के नाम हो? सकिला किसान। अन्त के भयो अचानक? के भयो मतलब? खोला तर्दाखेरि लड्नु भयो? त्यो बताइदिनुहोस् न के कस्तो भयो त्यो त्यतिखेर? तपाईँ लड्नुभयो त्यहाँदेखि छोरीलाई देख्नुभयो तपाईँले? के कस्तो ऊ चाहिँ तपाईँभन्दा अगाडि थियो कि पछाडि थियो? सँगै हात समाएको थियो अरे। हात समाएर ऊ पहिला लड्नु भयो अरे। उठ्दा उठ्दा फेरि छोरी चाहिँ यस्तो उतना लड्नु भयो। उतना परेर लडेर चाहिँ अरूले मतलब खोलाबाट निकालेको बच्चाको? तपाईँको साथमा अझै 2 जनालाई पनि बगाएको थियो है? 4 जनालाई बगाएको थियो? अच्छा। अनि तपाईँहरू जो जानु हुँदै थियो नि धान रोप्नुलाई होइन, कसको घरमा चाहिँ या त कसको आफ्नै जमिन हो कि अरूको? हैन, अर्कैको हो। तपाईहरु मजदुरीमा जानुभएको? मजदुरीमा जानुभएको। कति दिन्छ त्यहाँ मजदुरी जस्तो गर्दा? 300 खोला पार भएर 300। ल हुन्छ। के भएको थियो अरे? हामी त बिहान यहाँ आएको थियौँ काकाभित्र। अनि लास्टमा चाहिँ खोइ के भयो अनि दादाले फोन गरेको थियो मलाई। अनि दादाले भन्यो कि छिटो जाऊ उयो अजीहरू खोलामा छ भन। अनि आइ खोइ। तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो? ताराबारी नि। ताराबारी। तिमी पनि थियौ यहाँ उता धान रोप्नु जाने? थिएनौ? फोन गरेको थियो, घरमा थिएँ म त। ए दादाले चाहिँ फोन गरेको थियो। सकिना उरा के अरे सकिना किसान भन्यो नि? किसान कति वर्षको भन्यो? कति वर्षको? 22। खै थाहा भएन। त्यसको आफ्नै दिदी हो नि त। आफ्नो दिदी? खै यता हेर त। कति बजीतिर गएको उनीहरू चाहिँ धान रोप्नुको लागि? 9 बजीतिर। 9 बजीतिर गएको थियो? को थियो? कतिजना थियो त्यति बेला? थाहा भएन नि त। थाहा भएन? हामी त घरमै थियौँ नि त। म त घरमा थिएँ। दादाले चाहिँ फोन गरेर यसलाई थाहा थियो नम्बर अनि फोन गर दादाले। अनि दादाले चाहिँ हामीलाई फोन गर। ঘটনা কি ব্যাপার কি बताइदिनु? ঘটনা অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হয়েছে সকাল 9:30 থেকে 10টার দিকে। এর একটা 10-15 জনের টিম আমাদের কৃষকরা জমি রুপনি করতে নদী পার হয়ে ওই পারে যায়। না, ইন্ডিয়ার ভিতরে জমি, নদীর ওই পারে, মেচি নদীটার ওই পারে এই পারে দুদিকে কৃষি জমি আছে।
এবং যখন পার হয় তখন জল কম ছিল। জমির থেকে ফেরার পথে নদীর মাঝখানে হঠাৎ করে জল বেড়ে যায়, তাতে গিয়ে আমাদের 4 জন নদীতে ভেসে যায়, 3 জনকে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু একটা মেয়ে শিলা কিষান, যার নাম শিলা কিষান, সাকিনা কিষান যার নাম, আনুমানিক বয়স 22 থেকে 23 হবে, তিনি নদীতে ভেসে যান। তাকে উদ্ধার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলছে এবং আমাদের সরকারের যেসব দপ্তর, সমস্ত দপ্তর এখানে উপস্থিত আছেন। ফায়ার ব্রিগেড থেকে শুরু করে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে, পুলিশ, এসএসবি এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিরা এবং ভিডিও সাহেব, এবং এখন অবধি তাকে উদ্ধার করা যায়নি। ভিডিও সাহেব কথা বলছেন, ভিডিও সাহেবকে বলা হয়েছে, ভিডিও সাহেব কথা বলছেন, টিমকেও আমরা আনার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, এটা মনিরাম জিপির অন্তর্গত। বড় মনিরাম সংসদে ঘটনাটি ঘটে এবং বড় মনিরাম থেকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা নিহালজোত পার হয়ে আমরা এখন ছোট মনিরাম পার হয়ে আমরা এখন লালিজোতে এসে পৌঁছেছি। 2-3টে সংসদ খোঁজা হয়েছে, নদী যেভাবে প্রবাহিত হয়েছে, এবং এরিয়ার ইয়ং ছেলেরাও আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারাও, যুবক ছেলেরা যারা আমাদের আছে বড় মনিরাম কিলারামে, তারাও সকাল 10টার থেকে নদীতে, যারা নদীর সঙ্গে একটু সম্পর্ক আছে, যারা সাঁতার জানে, সমস্ত ছেলেপিলেরা এবং আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি। ঘটনাটা বড় মনিরাম সংসদ, সেখানে হয়েছে। ওখান থেকে এখানে কত কিলোমিটার? ওখান থেকে এখানে মোটামুটি ধরুন 7-8 কিলোমিটার তো হবে। ওর মা রেস্কিউ করা হয়েছে, বলছে মায়ের অবস্থা কি? না, মাও ভেসে গেছিল, মাকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখন নকশালবাড়ি সরকারি হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং আশা করি সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু উনারই মেয়ে, তাকে এখন উদ্ধার করা যায়নি। আমরা চেষ্টা করছি এবং আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব তাকে उद्धार करा सब रकम शक्ति दिए আমরা চেষ্টা করছি। ठीक जतिखेर उनीहरुको चाहिँ अहिले भेटेको छैन अनि र त खोजे भेटेको छैन अघिकै कुरो हो। नक्सलबाडी पुलिस प्रशासन आइसकेको छ, सबै आइसकेको छ। हाम्रो गाउँको एसएसबी को जवानहरु पनि छ, खोजिरहेको छ। अझ सधैँ त्यसरी जान्थे उहाँहरु? सधैँ हैन, अब आज पानी धेर थियो, आज चाहिँ अब त्यो रोक्नु पर्थ्यो उनीहरुले हैन। त्यो जसको खेत रोप्नु गएको थियो उले चाहिँ भन्नु पर्थ्यो आज खोलाबारी धेरै छ, आज नआउनु, आजै चाहिँ रोप्नु पर्छ भनेर पनि त थिएन नि त। त्यस्तो भएको छ। ताराबारीकै बडा मनिरामकै खेती त्यता रहेको थियो स्थानीय हजुर हामी सबै हाम्रो गाउँको। तपाईहरुले प्रयास गर्दा गर्दा पनि नानीलाई चाहिँ बगाएर लग्यो है? त्यतिखेर कोही पनि थिएन, मान्छे थियो भने त हामी निकाल्थ्यौं। बिहानको भन्दा खोला घटेको अलिक, अहिले त घट्दैछ, अलिक धेरै घट्यो अहिले। अच्छा अच्छा, अहिले घट्दैछ। अच्छा, कति किलोमिटर छ ताराबारी र यहाँ? यहाँ त धेरै नि। कति किलोमिटर? 5 किलोमिटर छ। ताराबारी भन्दाले पनि अहिले हामी यो मनिराम एरिया पर्छ हैन, यो ढाकनाजोत पर्छ। ढाकनाजोत एरिया यो मनिराम हो, तलको मनिराम हो। अब 5 किलोमिटर भित्र खोजिराख्नु भएको छ तपाईहरु? 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर त्यस्तै